Hello all, I welcome you all to ePolitical Science platform. And as you all are approaching with your exams, this time is highly critical for all of you. I hope you all are revising and going through your topics well. So to help you out, I will just discuss with you a few strategies, or you can say ways through which you can uh, try to do well in your exams, as well as you can keep these things in your mind while you are preparing and when you are attempting your questions. ओके हिंदी जिन बच्चों का हिंदी मीडियम है, वैक जो पेपर है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़, इसमें आप आई थिंक जिस दिन भी आपका पेपर है, all of you must be knowing that this paper is divided into practical and theory part. So you will be having the theory exam, and in the theory exam as uh, as we had discussed, so in that part we have to deal with few questions. You will be getting few questions in your exam, and out of that you have to attempt the number of questions which is set. So it could be 4, it could be 5, I exactly don't know. This is the new pattern, so I'm just helping you out that maybe whatever the pattern is, you try to cover all the topics properly. Don't leave it, because this paper is in continuity with all the units. Whatever you are dealing with, it has continuity with the first unit topic, has continuity with the second unit topic, and the second unit topic has continuity with the third unit topic. So here we need to understand that if we leave any part, we are not able to write well in our exams. Okay, though we may be selective that few topics or few subparts which we have not covered well, we can just touch it, and maybe we may not go very deep into that. So see, if you can see on the screen that the first unit, it talks about the Constitution of India. It has the various concepts. ठीक है, रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट है, सेपरेशन ऑफ पावर्स का है, फेडरल रिपब्लिक का है, सेक्युलरिज्म का है, सोशलिज्म का है, और भी टॉपिक्स हैं उसमें. तो जो भी यूनिट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को एक्सप्लेन करता है वो, ठीक है, उसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो वो सारे आप कवर करो. देन व्हेन वी कम टू द सेकेंड यूनिट, the second unit is the constitutional values. So in this second unit you have to deal with the unity, integrity, ठीक है, fraternity, dignity, जिसमें मैंने क्लास में डिग्निटी पे काफ़ी फोकस किया था. और डिग्निटी इम्पॉर्टेंट भी होता है बहुत हद तक, और किस तरह से हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं टुडेज़ कंटेम्प्रेरी जो इंडिया है, द इश्यूज़ विच आर इमर्जिंग रिलेटेड टू डिग्निटी. सो प्लीज़ गो थ्रू दैट. और न्यूज़पेपर्स, करंट जो भी हैपनिंग्स है, उसके साथ कॉन्स्टिट्यूशन के वैल्यूज़ को कनेक्ट करने की कोशिश करो आप, कि क्या वो बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, इस तरह से. तो थोड़ा सा एक क्रिटिकल परसेप्शन आपके जो माइंडसेट में इमर्ज करेगा, एंड देन यू विल बी एबल टू राइट अ गुड आंसर, ओके, फॉर दिस पेपर. देन द थर्ड पार्ट इज़ द फंडामेंटल ड्यूटीज़, जिसमें हम मौलिक कर्तव्यों को डील करते हैं. तो मौलिक कर्तव्यों में मैंने जैसे 51A से लेकर के K तक आर्टिकल है इसमें, और 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं. तो ईच फंडामेंटल ड्यूटीज़ दे आर हैविंग देयर ओन इम्पॉर्टेंट. आई हैड मेड अ वीडियो ऑल्सो ऑन दैट. But many times what I feel that as most of the students, they have a narrow view, and they are just trying to limit their understanding of fundamental duties to few things. So that should not be there. There are many emerging fundamental duties, there are many emerging concerns which are being raised also in the news, media, और आप भी पढ़ते हैं उसको, आप अपनी डेली लाइफ में भी देखते हैं. तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ इज़ अ पार्ट एंड पार्सल, ओके, ऑफ आवर ओन बिहेवियर पैटर्न. सो दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड, और उसको थोड़ा सा हमें नैरो अंडरस्टैंडिंग से बाहर निकल के ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से उसको कनेक्ट करने की कोशिश करनी पड़ेगी. नाउ वाइल राइटिंग, इफ़ यू आर गेटिंग 10 मार्क्स क्वेश्चन, लाइक सपोज दिस जस्ट आई एम जस्ट टेलिंग यू, सो दैट इफ़ यू गेट सच अ क्वेश्चन व्हाट यू कैन डू ना. अगर आपको 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, मे बी आई थिंक दिस थियरी पेपर में कुछ सिलेक्टिव होंगे आप,
नंबर ऑफ क्वेश्चंस में कुछ सिलेक्शंस आपके पास होगा, चॉइस होगा, कितना चॉइस होगा आई डोंट नो अबाउट दैट, बट सपोज यू आर गेटिंग 10 मार्क्स क्वेश्चन। अभी आप जब 90 मार्क्स क्वेश्चन के लिए यू आर वन वन क्वेश्चन इज कैरिंग 18 मार्क्स, सो वो 18 मार्क्स क्वेश्चन यू मस्ट बी राइटिंग अ लॉन्ग आंसर, लाइक जैसे हम पहले करते थे, पहले भी 18.5 का होता था, अब 18 का हो रहा है। तो आई यूज़ टू एडवाइज लाइक 650 वर्ड्स टू 700 या 600 to 650 वर्ड्स मैक्सिमम, इतना विद गुड क्वालिटी कंटेंट एंड नॉट रिपीटेशन ऑफ थिंग्स। उसके साथ साथ अगर आप 10 मार्क्स का क्वेश्चन अगर आ रहा है तो आप यहाँ पे 350 से 400 वर्ड्स, ठीक है, मैक्सिमम, या 300 से 350 भी लिख सकते हो। प्लीज़ डोंट थिंक दैट इट इज़ गोइंग टू यू आर गोइंग टू गेट एनीथिंग शॉर्ट नोट या फिर कुछ मे बी आ भी सकता है, आई डोंट नो, बट जो भी आ रहा है आपको क्वेश्चन, जो भी आ रहा है आप ये ध्यान रखिए। अगर शॉर्ट नोट भी आप एग्ज़ाम में अटैम्प्ट करते हैं तब भी शॉर्ट नोट का मतलब नहीं है, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इन टर्म्स ऑफ पेजेस, you need to write the content, you need to write the things, whether you are writing a question as a short note or you are writing a question as a long answer. The only difference which it makes is the you can say the content and the quantity which you are writing, ठीक है। कंटेंट में तो सिमिलैरिटीज़ है बहुत हद तक, क्वांटिटी में सिमिलैरिटी नहीं होती कि वहाँ आप शॉर्ट नोट में कम लिखते हो, पर कम में भी आपको मोस्टली सारे पॉइंट्स तो कवर करने होते हैं ना। सो दैट इज़ द थिंग, डोंट कीप दैट थिंग इन माइंड कि हमें कम लिखना है, कम मार्क्स हैं तो हम अपने आंसर्स को अधूरा लिख दें, है ना, या हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर ना करें एंड देन वी एक्सपेक्ट गुड मार्क्स। So that is not going to happen, so we have to keep these things in mind. Then while writing answers, please try to balance. If you are writing 4 question or 5 question, 1 or 2 question you are writing very good, and the other 3 third fourth fifth फिर उसके बाद degenerate हो रहा है आपका क्वांटिटी भी क्वालिटी भी, और कुछ में तो लिख ही नहीं पा रहे कुछ, तो इसके साथ बहुत इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू मैनेज योर टाइम, एंड सिंस यू आर फर्स्ट ईयर, सो you should keep writing and try to practice 1 or 2 questions before attempting your exams. Now if you are I told you that one very long question and another too short, it should be avoided. This type of strategy should be avoided. Then for this whole paper you may refer to Subhas Kashyap. It's a very good book. हिंदी में भी हमारा संविधान है, सुभाष कश्यप की किताब, उसमें आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़ पूरा जो सेकेंड यूनिट है मैंने क्लास में बताया है, अच्छे से कवर हो रहा है, वैल्यूज़ वाला पार्ट। हाँ, जो फर्स्ट यूनिट है उसमें आपको थोड़ा थोड़ा जो है कुछ या तो कुछ आप रीडिंग्स एनसीईआरटी ले सकते हो, या फिर अदर जो डीडी बासु से भी आप कुछ ले सकते हो, कुछ न्यूज़पेपर रीडिंग से भी ले सकते हो। थोड़ा सा कनेक्ट करना पड़ेगा फर्स्ट यूनिट के लिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट बेस्ड है, वो हर किताबों में नहीं मिलता। और थर्ड यूनिट में क्योंकि वो इम्प्लीमेंटेशन वाले पार्ट पे मतलब बेस्ड है, तो आपको करंट के साथ उसको कनेक्ट करके देखना पड़ेगा। और थोड़ा सा उसमें फ़िलोसफिकल पार्ट है, उसमें मैंने भी रीडिंग्स भेजी थी, तो फ़िलोसफिकल पार्ट फंडामेंटल ड्यूटीज़ का, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो वी नीड टू कवर ऑल द टॉपिक्स प्रॉपरली, एंड देन ओनली वी कैन एक्सपेक्ट दैट we will be doing good in our exams. Okay, so I hope this paper, since uh, this paper is on demand by students, and students, lots of students, they have opted for this paper, and obviously this paper has a long term perspective and many outcomes, future outcomes also. So do well in this paper, and if you have any issues, any problem, you are most welcome to put your comments, and God bless you. Thank you.